आप सुन रहे हैं सबकी आवाज़। मैं हूँ प्रिया गोयल आपके साथ। आज हमारे साथ है मिस कीर्ति गर्ग जो साइकोलॉजिस्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, लाइक कैसे पता चलता है? I'm happy कि हम इन questions को raise कर रहे हैं and that you're asking me this question. Thank you for having me. To begin with, depression और anxiety is very different. Anxiety disorder for that matter. वो बहुत अलग है। जो हम basic loneliness, basic sadness, basic घबराहट जो हम feel करते हैं, उससे ये mental illnesses बहुत different है. So depression एक diagnosable चीज़ है। किसी को बोलना कि हम इतना frequently you are depressed या आप एक depressed इंसान हो, हम इतना frequently ये use करते हैं. But depression is actually a diagnosable disease, illness. What depression means is कि 2 हफ्ते तक कुछ set of symptoms होते हैं, अगर हमें वो किसी में दिख रहे हैं, then a proper professional can diagnose the person as having depression. So day-to-day loneliness, day-to-day sadness is not depression, number 1. Number 2, in order to be, in order to find out the symptoms, जैसे आपने मुझसे पूछा, अगर आप देख रहे हो कि आप में या आपके लव्ड वन में सोने का पैटर्न बदल गया, कोई इंसान ज़्यादा सो रहा है या कोई इंसान बहुत कम सो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो उनका नॉर्मल स्लीपिंग शेड्यूल था, या ईटिंग हैबिट्स कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, कोई बहुत ज़्यादा ईट कर रहा है, बहुत कम ईट कर रहा है, दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग दैट दे यूज्ड टू एंजॉय अर्लियर। तो किसी को फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद था, वॉक पे जाना पसंद था, एंड यू सी ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत लोनली रह रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट टू कम, then we can take the person to an expert who can diagnose the person as having depression. So in science को हमें look out करना चाहिए when we want to figure out कि are we leading towards depression or somebody we know is leading towards depression. So ma'am, there is a big difference between stress and a depression. Yes, definitely, definitely. जो ये हम common words use करने लग गए हैं slang में, that I feel depressed, no, I feel sad, I feel lonely, I'm not feeling comfortable right now, I'm not depressed. Depression is a mental illness which has a diagnosis, so we cannot just use it as a slang. तो मैम अगर किसी को पता चलता है कि वो डिप्रेस्ड है, एक्चुअल में डिप्रेस्ड है, तो फिर वो अपनी तरफ से क्या स्टेप्स ले सकता है? Number 1 step and the most important step is to always reach out to an expert. Always reach out to a mental health professional. हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास we have been taught that help लेना मतलब तुम कमज़ोर हो, तुमसे अकेले सब कुछ नहीं हैंडल हो पा रहा है, इसलिए you are going to an expert. However, I personally, as a practicing psychologist, I believe that anybody who reaches out for help has so much of strength, has so much courageous, because the person is ready to change themselves. The person is ready to share their vulnerabilities. Somebody is ready to unlearn things, learn new things. That shows the person कितना strengthful है, कितना strong है, कितना courageous है. So if you feel that you are going through a difficult time or things are becoming overwhelming for you, या आप नहीं deal कर पा रहे, again the stressor can be something, कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है. It is completely okay, and what is advisable is number 1 to reach out to a professional, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेन है, एक प्रोफेशनल के पास एक्सपर्टीज़ है वो सारी, कि वो आपको स्टेज से बाहर निकलने में मदद करवा सकता है. You can always engage in some journaling. You can always talk to people, to your loved ones. You can share your feelings with them. You can, you can engage in some activities that make you feel good, even if it is for a little amount of time. So ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटा छोटा benefits देंगी. In order to actually come out of that phase, if they are diagnosed with depression or if they are moving towards depression, it's best to reach out to a professional. मैम जैसे कि हमें पता चलता है कि हम डिप्रेशन में हैं, बट स्टिल अब कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई भी नहीं होता जिससे हम शेयर कर सकते हैं. इवन हमारा पेयर प्रेशर होता है कि हम फ्रेंड्स की वजह से शेयर नहीं कर सकते. हम पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताते कि वो कहेंगे कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में गलत है ये सब, और हम टीचर्स को भी कितनी बार नहीं बता पाते हैं. तो फिर हम तब तो क्या ही करेंगे ना. लाइक हम एक्सपर्ट्स के पास हम जब भी जा सकते हैं. अगर एक टीनेजर है, जब तक उनके पेरेंट्स उनको नहीं लेके जाते हैं, अगर खुद से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? सो देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि देखो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि तुम किसी को भी नहीं बता पाओगे. देयर विल ऑलवेज बी अ लव्ड वन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर, अ मेंटोर, अ गाइड. किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई इंसान सबकी लाइफ में होता है जिससे वो एकदम अपनी सारी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हैं और एकदम कंफर्टेबली उनके साथ ओपन अप होते हैं. सो इफ यू हैव दैट पर्सन, दैट गो टू पर्सन, इट्स परफेक्ट. अदरवाइज रीच आउट टू प्रोफेशनल ना, जहाँ पे तुम इजीली ओपन अप हो पाओ और अपने आप को बेटर जान पाओ और अपने आसपास की सिचुएशन को बेटर डील कर पाओ. रही बात की जो टीनेजर्स हैं, जैसे आपने पूछा, या एडोलेसेंट्स हैं who cannot afford therapy, who cannot go for therapy without parents,
अप्रूवल, इट इज इम्पॉर्टेंट ऐसी सिचुएशंस में हम पेरेंट्स को भी साइको एजुकेट करें एज अ कम्युनिटी एज अ होल। सो कुछ टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, कोई काउंसलर पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स रखें हैं जिसमें हम पेरेंट्स को ये चीज़ समझा रहे हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दे कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग एंड इट इज कम्प्लीटली ओके टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। इसी तरह इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू वी कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द राइट एक्सपर्ट। मैम इवन सोसाइटी में भी कहा जाता है कि लाइक तुम पागल हो, ऐसे बोल देते हैं कि दैट रियली गिव्स अस स्ट्रेस। Right. I understand that and I will not disagree with this because we live in a society like this जिसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो इन टर्म्स का मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की वल्नरेबिलिटीज को नहीं समझ पाते, या वी से कि कोई लड़का रो रहा है तो उस पर हंस रहे हैं लोग। वी डू कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक दिस, देयर आर पीपल इन द सोसाइटी लाइक दिस। हाउएवर देयर आर आल्सो दोज पीपल जो शायद समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू navigate through all of this, it's best that you understand yourself first. You understand that if I am crying as a person, does that really mean I'm weak, और डज दैट मीन दैट आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग हाउ आई एम फीलिंग? मेरे को खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरे को बहुत उदासी हो रही है, मुझे कुछ पेनफुल किसी ने कुछ बोला इसलिए मैं रो रही हूँ, वट इज़ द रीज़न वाई आई एम क्राइंग? वंस यू बिकम assured with how you're feeling and why you're feeling what you're feeling, what others say will stop bothering you so much. So the more you become self aware, the more you become self accepting, the more you start loving yourself, आसपास की दुनिया क्या कहती है वो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल मेच्योरिटी Yes, आल्सो, ma'am. स्लैंग में। सो इट इज इम्पोर्टेंट। और मैम पूछना चाहती हूँ कि ना ऐसा कहा जाता है अगर स्ट्रेस में होता है, डिप्रेस्ड होता है तो वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, इज इट ट्रू? Obviously not. Introversion, being an introvert is a personality type. कोई इंसान अगर कम बोलता है या वो शाय है या वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करता है और कुछ लोगों के साथ नहीं ओपन अप हो पाता, दैट इज जस्ट हाउ द पर्सन इज, इट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। लाइक आई सेड, डिप्रेशन एक डायग्नोजेबल चीज़ है, एक मेंटल इलनेस है। ये बोलना कि किसी को डिप्रेशन है उसके लिए पूरा डीएसएम क्राइटेरिया होता है जो तुम्हें पूरा फुलफिल करना होता है कि 2 हफ्ते तक तुमने ये फील किया, ये खाया, ये पिया, ऐसे सोए, व्हाट वाज योर वे ऑफ योर लाइफस्टाइल, राइट? ओनली इफ दैट इज फुलफिल्ड विल यू बी कॉल्ड, विल यू बी सेड दैट यू आर डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। सो बीइंग डिप्रेस्ड और being introvert has nothing to do with each other. Sometimes this does happen that somebody who is going through depression, they might prefer living a little alone, but again that is not introversion. So ये दो अलग concepts हैं और हम इन्हें जितना ज़्यादा हम लोगों को educate करें इसके बारे में, like you're doing through your channel, जितना ज़्यादा हम लोगों को इस बारे में हम educate कर सकते हैं, that is the most we can do for the community. और मैम स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैम यूथ में ना एक दो ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आई एम ऑल्सो अ टीनेजर, तो जो दो मेन प्रॉब्लम्स होती है, फर्स्ट इज करियर कंपटीशन जो इतना ज़्यादा है, एंड द सेकंड वन इज रिलेशनशिप्स। इट कैन बी विद पेरेंट्स, टीचर्स, बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लाइक एनीवन। Right. तो उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं कि पापा ने ऐसा कह दिया तो फिर क्यों कह दिया, या टीचर ने हमें क्यों नहीं सिलेक्ट करा, तो फिर वो सब हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, अगर हम बात करें करियर की, कंपटीशन की, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इजी, इट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी कि हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी से। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इवन आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, आई एम श्योर यू आल्सो, राइट? वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमें बुरा फील कराता है। वी स्टार्ट टू सी आवरसेल्व्स एज इन्फीरियर, वी स्टार्ट टू सी आवरसेल्व्स कि वो मेरा फ्रेंड ने भी ये क्रैक कर लिया एग्जाम, ये इंटर्नशिप्स कर ली, मैं अभी तक यही रह गई हूँ। दिस इज बेसिकली एन अपवर्ड comparison that you're doing. You're comparing yourself with somebody who is probably performing better than you. It is important कि अगर आपको comparison करनी है, you also do a downward comparison. So you compare yourself with millions of people जिनसे तुम better कर रहे हो. You're privileged in so many others. You are probably having this YouTube channel that nobody else is having. So you are so much better than others also. So that if you want to compare it both ways. Number two, it is also very important to get this belief in your head, and the faster you do that, the easier the life becomes. And the belief is that your progress has nothing to do with my progress. We don't know what the other person is going through, we do know what we are going through, right? So mere struggles, mere healing, everything will be a different thing as compared to others. Also keep reminding yourself that it's okay, हर दिन productive होना जरूरी नहीं है, हर दिन अपना बेस्ट करना जरूरी नहीं है। You are allowed to have low days, you are allowed to not do anything, take breaks. I think it's high time we start normalizing such things. अब रही बात रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप में हमेशा मेरी गो टू एडवाइस होती है कि इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कम्युनिकेट, whether it is with your partner, your family member, your teacher, your friend, or anybody.
And when you're communicating, use I statements. Tell the person that I feel this way. I don't know what your intent was, but I felt bad when so and so action. बट मैम कितनी बार ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप्स में कि हमेशा हम ये बोलते हैं कि वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों। तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि कुछ भी गलत हो जाता है कि मेरे साथ ही क्यों, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ। तो फिर उस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि आप ही के साथ नहीं, औरों के साथ नहीं। हाउ डू यू नो औरों के साथ नहीं हो रहा कुछ भी? बट मैम हमें तो अपनी चीज़ें दिख रही है ना, तो Exactly. We are living in our body, we are living in our mind, so we know what is going through with us. We know the छोटे से छोटा mistake that we are making, the छोटे से छोटा wrong thing that is happening in our life. We are aware of that because it's happening with me. We don't know what is going on with others, or you will never be able to get the answer to the question why me. So the faster you drop this question altogether and you just start accepting life the way it is, you start accepting that my life or anybody's life for that matter is not meant to be perfect. It's meant to have its own roller coaster. It's meant to have its own hurdles, and it's okay. It's okay if I'm not making the best of the decisions. It's okay. I don't have to be perfect. हम जितना perfectionism के towards जाते रहेंगे या if perfectionism is the only value we hold in life, it will keep pulling us down because we will never be grateful. We will never be happy with what we have. So जो हम ये why me पूछते हैं, इसका आंसर सिंपली ये है कि क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दो बिकॉज इसका आपको आंसर नहीं मिलेगा. Nobody knows why you, and at the same time you do not know what others are also going through, right? I hope that helps. Yes, ma'am. At the last, ma'am, I just want to ask कि आप प्लीज अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, like how people can volunteer. Yes, sure. So, along with being a practicing psychologist, I'm also the founder of the Psych Life. It's a mental health initiative that was started by me 2 years back. We are working on 4 pillars as of now, 4 pillars of the Psych Life. Number one is mental health advocacy. We're trying to raise more and more mental health awareness, break the stigma around mental illnesses. Number two is providing affordable therapy and counseling services. Number three is providing five-star trainings and workshops to psychology as well as non-psychology students. And number four, we are also building India's first mental health store. So these are the areas that we are working upon. You can always connect with us if you're interested in volunteering or joining our team. You can always connect with us through our website www.thecyclife.com, or you can connect on our social media handles. Apart from that, we do come up with a lot of initiative time and again, and we do look out for volunteers who are ready to advocate for mental health and be there. So as and when announcements are made, you can definitely get in touch. Thank you so much, ma'am. Again, I want to ask one last question. Can you please say something for our audience? Okay. For the audience, I think one message that I would like to give all of you is we invest so much when it comes to entertainment, when it comes to food, when it comes to physical health, when it comes to education, when it comes to any area of our lives. But we hardly invest when it comes to our mental health. So it's high time that you start investing on your mental health. It's high time that you start prioritizing self-care. It is high time that you stop, stigmatizing people who are reaching out for help. Because reaching out for help is the most courageous step that a person can take for themselves. It is not easy to learn new things. It is not easy to unlearn the old patterns. And if somebody is ready to do that, there is nobody stronger. So I'm proud of each one of you, whoever is listening to me. If you have ever reached out for help, you have all my heart, and I'm very proud of you. And if you do need help, please don't hesitate, and please do reach out to a mental health professional. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.